Hello students, today we all have learned about the remaining phylums of animal kingdoms. In the previous session, we all have know about the special feature of the Porifera. Today we all have know two phylums, special features, phylum Coelenterata and phylum Ctenophora. Classification of animal kingdoms. The phylums Coelenterata, CO, Coelenterata, or other name is Cnidaria. Phylum Coelenterata and other name is Cnidaria. 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 What are the special features of the Coelenterata? How can we all of identify the Coelenterates are nuts? The name, phylum name is Coelenterata. The meaning of Coelenterata is coelentron. The animals, these group animals have a specific body known as coelentron. Coelentron like as body cavity, means these animals have coelentron. It is the special features of the Coelenterata. Coelentron is present. Second, these are all of aquatic. They are aquatic, but some are freshwater, and mostly they are marine. कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनकी जो हैबिटेट है वो समुद्री होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक. इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, उसमें टू ही जर्मिनल लेयर्स होते हैं. टू जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. Two germinal layers. So these base are the presence of these two germinal layers. They are known as diploblastic. And next, incomplete type of digestive system is present. इस ग्रुप के एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग एक सिंगल पोर्स के थ्रू होती है, और उसी सिंगल पोर्स में इंजेक्शन भी होता है और एक्जेशन भी होता है. तो इस टाइप के जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसको हम इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो इस फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज
tentacles are present in the mouth region. The tentacles help in the locomotion and the capturing of फीड. टेंटिकल्स का क्या रोल है? ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ फूड को कैप्चर करने में भी हेल्पफुल होते हैं. एंड नेक्स्ट फीचर इज देयर बॉडी इज फाउंड इन टू फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप and medusa. The polyp body is cylindrical. Cylindrical होती है. Polyp जो होती है cylindrical body होती है. Cylindrical and medusa is the umbrella like. Medusa is the umbrella like. Medusa is the umbrella-like bodies. And next point is reproduction. The reproduction takes place two methods, asexual as well as sexual. They reproduce two methods, sexually as well as asexually. The skeleton is present in the coral forms. The corals are accumulated in the sea and form a specific structure known as coral reef. The coral reefs are different types based on their structures. Atoll, barrier reef. The coral reefs are very attractive, colorful. These are the various special features of the coelenterate. And the next main features is there. The other name of coelenterate is the cnidaria. Other name of coelenterate is known as cnidaria. What is means of cnidaria? Cnidaria means nidoblast. These animals have nidoblast. It is the specific features of the coelenterates. The nidoblast specific cells that helpful in the hunting of the hunt. ये स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिसमें टॉक्सिक मटेरियल भरा होता है और ये टॉक्सिक मटेरियल किसी भी हंट को, शिकार को मारने के लिए यूज करते हैं. नीडोब्लास्ट, CNIDO, Nidoblast. It the specific cells which help in the hunting. Examples of coelenterates is Hydra, Physalia, Siphon, jellyfish, etc. Various examples of the coelenterates. The next phylum of animal kingdom is phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora. What are the special features of phylum Ctenophora?
The special features of Ctenophora is number 1. These are totally marine. These are totally marine, मतलब ये completely समुद्र में ही पाए जाते हैं, marine. And next point is their body is jelly like, calm jelly like. इसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और जेली लाइक होती है. नेक्स्ट, these animals have डिप्लोब्लास्टिक. इनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है. 2 germinal layers are present, ectoderm and endoderm. Ectoderm and endoderm, 2 germinal layers are present. And next point is the body wears comb plate. Comb plates. The comb plates helpful in the locomotion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 comb plates. 8 comb plates. These comb plates help in the locomotion. And next features, these are all of hermaphrodites, means इस फाइलम के एनिमल्स hermaphrodite होते हैं या bisexual होते हैं. And the fertilization takes place in the external medium and development is the indirect. Development is direct. They show special characters, bioluminescence. The animals of these groups exhibit special features known as bioluminescence. The bioluminescence, what are the bioluminescence? The emitting of lights. The emitting of lights of organism is known as bioluminescence. Bioluminescence वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनिमल्स अपनी बॉडी से लाइट्स को इमिट्स करता है, मीन्स प्रकाश उत्पन्न करता है, इज नोन एज बायोलुमिनेंसी. द लूसिफेरन केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द सम इंसेक्ट्स, दैट इज जुगनू, also exhibits the bioluminescence. So these are the various features of the phylum Ctenophora. Examples: Ctenoplana and Hemiphora, etc. Various examples of this phylum.